Sorry for the delay. I got some alumni coming and discussing their questions of interviews and all that. So with them. Okay, chalo guys. So let's move. We have completed with if else. So what we are discussing? We are discussing flow controls in Python. We already completed first thing, that is conditional statement, if else and its variants like if else, if else, and ternary operator if else. Now let's go ahead. Loops, for and while. So loops is another way we can have our okay, the flow, okay, which is going on. We can change the flow. In Python there is a innovative addition to simple while or for loops, that is while else, and for loop also has for else. There is a additional statement else, okay, or you can say construct else, which is added in the loops constructs. Let us discuss the cases. So let's say I want to print hello 10 times. Okay, so guys, that looping, when we use loop is when you want to take a small code and you want to repeat it again and again. अगर एक कोड लेना है आपको और बार बार उसको रिपीट करना है, ओके, तो हम उसको लूप में डालते हैं. ओके, अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू रिपीट. ओके, लूप में क्या डालना है? लूप शुड हैव, लूप कंटेन्स code or lines of code which you want to repeat. Okay, जो रिपीट करना है वो लूप में डालना है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट ओनली वंस, ओके, आउटसाइड द लूप line is executed only once. So याद रखना, जो चीजें आपको एक बार रन करनी है वो लूप के बाहर. Whatever you want to run once outside the loop, whatever you want to repeat again and again, you have to put it in the loop. Okay, simple logic. Okay, so I want to print hello 10 times. Okay, so what I will do is, let's say I want to take a variable count. मुझे count लेना है. Count I want to start with 0. तो अब देखो, count 0 मुझे एक ही बार 0 करना है count को, या मुझे बार बार काउंट को 0 करना है? नहीं, आई वांट टू मेक काउंट 0 वंस, तो लूप के बाहर. देन आई विल स्टार्ट विद द लूप व्हाइल काउंट. आई पुट अ कंडीशन काउंट लेस देन 10. जब तक काउंट 10 नहीं होता तब तक. ओके, आई एम गोइंग टू रन टिल काउंट बिकम्स 10. आई एम गोइंग टू प्रिंट hello. So, hello. Okay, and then I can say count equal to count plus 1. Okay, so this loop, okay, this count 0 is called initialization. इसमें क्या होता है? स्टार्ट होता है, हम काउंट को 0 करते हैं, इनिशियलाइज हो गया वैल्यू, फिर हम व्हाइल लूप में कंडीशन लिखते हैं. द सेकेंड पार्ट इज द कंडीशन एंड द थर्ड पार्ट इज इंक्रीमेंट, और यू कैन से डिक्रीमेंट और चेंज. ठीक है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ व्हाइल लूप: initialization, condition, increment, decrement, or change. Okay, so whenever you are running any while loop, keep these 3 things in mind. Now again, I'm coming out of the while loop and I'm printing completed. So completed kitni baar print hoga? How many times completed will get printed? Especially those who are new to programming, please respond in the chat. How many times completed will get executed? 10 times, 1 time? How many times hello will be executed? 10 times, 1 time? Right, hello 10 times.
Okay, perfect. 10 times hello, 1 time completed. Perfect. Okay, great. So understand, whatever is there inside the while loop के अंदर जो भी है, okay, lines inside while loop 10 times. ठीक है, तो हेलो, काउंट प्लस वन, ये सब 10 टाइम होगा. एंड lines which are outside while loop, they will be executed only once. So जो completed है which is outside the while loop, so completed outside the while loop है, so that's why it will be executed only once. Okay, so बस ये छोटा सा लॉजिक है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि कोड के अंदर अगर लिखा, while loop के अंदर लिखा तो मल्टीपल टाइम्स होगा, मेनी मेनी टाइम्स. एंड while loop के बाहर लिखा तो वन टाइम. ओके, कीप दिस लॉजिक ऑलवेज इन योर माइंड for better understanding. Now, guys, what I want is just a small program. Um, take 10 numbers from the user and add them into total variable. क्या करना है, 10 numbers लेने हैं. Take 10 numbers, take 10 take 10 numbers, that is integers, from user and add them in variable total. ठीक है, and print the total. चलो, next 5 minutes try to do this. सेम कैसे इनपुट लेना है यूजर से, आई एम जस्ट गिविंग ए हिंट. जैसे ऊपर किया था, नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर. ठीक है, सो इस तरह से दिस इज हाउ यू टेक द इनपुट. अब तुम सोचो कितनी बार करना है, नंबर कितनी बार लेना है, टोटल में कैसे ऐड करना है. थिंक अबाउट इट, ट्राई टू डू इट. ओके, नेक्स्ट 5 minutes. ओके, if once you get completed, type C in the chat box so that अगर जल्दी सबका complete हो गया तो we can discuss immediately. If you get any questions, any clarification, let me know. You can refer to the while loop code which is above. Okay. This code I will keep for reference.
Okay, Sagar has completed. Anybody else who has completed? Okay, I will also do with you. Chalo, let me code along. So, okay, what we want to do is take 10 input integers from the user. So this is how we take the number. So what I want to do is again do this 10 times. मुझे ये 10 बार करना है. So what I will do is same way, count equal to 0 while count less than 10. Okay, enter number integer. Okay, मैं क्या करूँगा 10 बार integer ले लूँगा. Okay, and obviously I have to increase the count equal to count plus 1. तो ये लूप चलेगा 10 बार. This will go on 10 times and 10 numbers ले लेंगे. Okay, what I want to do is I want to also have a total. So total, we will start the total at 0. Understand, now total we want to make it only one time. Okay, make it 0 only once. बराबर, सिर्फ एक ही बार 0 करना है. So we are putting it outside. Okay, we don't have to put it inside the while loop. Okay, we want to take the numbers 10 times, so inside. Okay, keep in mind जो चीजें बार बार करनी है उनको while loop के अंदर डालना है. जो चीजें बार बार नहीं करनी है, वन टाइम करनी है, उसको while loop से बाहर रखना है. ओके, कीप इट सिंपल. ओके, ठीक है. सो टोटल को 0 किया only once outside, फिर while loop चलाया and then we have taken the numbers from the user. अब क्या करेंगे, टोटल में ऐड करेंगे. सो टोटल इज इक्वल टू, सो देर इज अ शॉर्ट हैंड, टोटल प्लस नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, या यू कैन राइट इट लाइक दिस, टोटल प्लस इक्वल टू नंबर. ओके, दिस इज अ शॉर्ट हैंड. Shorthand for line number 6, sorry 7. Okay, ठीक है. And this we will have the total printed. अब मुझे बोलो, okay guys, everyone please pay attention and respond. टोटल कितनी बार प्रिंट करना है? हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट टोटल? वंस और 10 टाइम्स? कितनी बार करना है? एक ही बार करना है या 10 टाइम्स करना है? सागर says once. What about others? Okay, once. Okay, so while loop के बाहर या अंदर? Outside the loop, right? So again we will print total, say total equal to, and say total. Okay, total will be outside the loop. ठीक है. So I'm going to enter to 10 numbers. Oh my god, that is a task for me. One. Sorry, the control is going here and there. Just a moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0. So it's 10 numbers, that's 45. 0 to 9. I put 0 to 9 numbers, so total is 45. Clear? Okay. So everyone got it. This very important logic. ये बहुत बार छोटी छोटी चीज़ों में आगे काम आएगा. Guys, understand that logic building is not a rocket science. Logic building means you have small code snippets. छोटे छोटे parts होते हैं logic के. If you can practice them, you remember them, and then big programs contain these small parts of logic, like a jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle में
कैसे होता है पजल में अलग अलग पार्ट्स दिए होते हैं और छोटे छोटे पार्ट ज्वाइन करके एक बड़ा सा मास्टरपीस बनता है. इट्स लाइक दैट. Logic building, small parts you have to study, you have to practice them in the assignments and all these things. And then when the interview questions come, the coding round question comes, they are like a masterpiece. बड़ा सा पीस बनाना होता है आपको, तो छोटे छोटे पार्ट्स मिला के you solve a big puzzle. Okay, it's like that. So fine, this is an important logic. Those who are new to logic building or programming, mark this as important code. ओके ठीक है. सो दिस इज वाइल लूप. वाइल लूप में हमने तीन चीजें देखा. वाइल लूप मींस इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और चेंज. So keep that in mind. Whenever there is any problem with the while loop, any error in the while loop, you have to look for one of these three things. Okay, initialization, condition, or increment, decrement, or change. Okay, I hope my audio is very clear to all of you. uh, if there is any problem with the audio, let me know. ठीक है. Now let us discuss the while else case. Okay, while else कब यूज होता है? when the while else is there. एक स्पेशल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट बनाया है पाइथन ने, which is while else. So else will be executed. So understand, else part is executed when whole loop, that is complete loop, I'll say, rather than whole I'll say complete loop is executed without break. ठीक है. ब्रेक, बिना ब्रेक किए अगर पूरा लूप चला तो कहाँ जाएगा? else part. Then it goes to else part. Okay, till the time there is no break, okay, in the while loop, okay, it will go on. While loop will complete. अगर without break complete हो गया, then it will go to else. If there is any break, then it will not go to else. Let's see an example. Let's say, for example, say take 5 numbers from user. Okay, if any number is negative, then break the loop. Okay, if all numbers are positive, then print message all positive. ठीक है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्या करना है? यूजर से 5 नंबर लेने हैं. ओके, वन बाय वन लूप में. एंड अगर सारे के सारे, इफ ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव, तो क्या करना है? मैसेज देना है ऑल आर पॉजिटिव. अगर एक भी नंबर नेगेटिव है तो ब्रेक द लूप एंड नो मैसेज. ओके, सो लेट्स डू इट. सो अगेन काउंट इक्वल टू 0 वाइल. अब क्या होगा? वाइल काउंट लेस देन 5. बराबर 5 टाइम्स चलाना है. सो काउंट लेस देन 5. काउंट 0 से चालू किया, दैट्स वाई लेस देन 5. एंड देन वी विल से that okay, number is equal to, sorry, number is equal to int input, enter a number, and now if number less than 0, then we will say break the loop. अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है, that is less than 0, we are going to break it. Okay, break the loop, else we will continue, no problem. Okay, now in case all the numbers are positive, okay, then comes else. Remember, this is while else, it is not else of if. Okay, if का else है क्या? नहीं. ऑब्जर्व द इंडेंटेशन.
इंडेंटेशन प्रॉपरली देखो, एल्स का इंडेंटेशन कहाँ है, वाइल के नीचे. सो एल्स इज कमिंग बिलो द वाइल, सो इट इज वाइल एल्स and it is not if else. Keep that in mind. Okay, so we are going else print all numbers are positive. Okay, so remember else में कब जाएगा, else part is executed when break is not executed. ठीक है, इन केस लूप के अंदर ब्रेक नहीं हुआ, then we are going to go to else part. Otherwise we are going to just complete the loop, while loop, and go uh, like break it and go ahead. else में जाएंगे नहीं. Clear है? So now I'm going to run 5 numbers. I'm going to say 1 2 3 4 and 5. So अब, oh I'm sorry, क्या कर दिया मैंने, what is the mistake I have done here? कोई बताएगा? What is the mistake? This is a common mistake in while loop which I have done, which is good. हाँ, यहाँ पे क्या मिस्टेक है while loop में? Observe and tell me. एक लॉजिकल एरर है. दीपाली, पाइथन में सेमीकोलन का जरूरत नहीं है. ओके, सेमीकोलन का जरूरत नहीं है पाइथन में. नो प्रॉब्लम. अब देखते हैं. सागर इज राइट. सी, ऑब्जर्व, देखो, व्हाइल लूप में क्या तीन चाहिए, चीज चाहिए. व्हाइल लूप में तीन चीज है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और चेंज. कीप दैट इन माइंड. इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और चेंज. सो नाउ अब मेरा कोड देखो, इधर क्या हुआ, दिस इज काउंट जीरो इज इनिशियलाइजेशन, काउंट लेस देन 5 इज इंक्रीमेंट, सॉरी कंडीशन. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक हुआ, बट वेयर इज द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट? Yeah, it's not there. So it is infinite loop shaker. That's right. If we miss the increment or decrement, then it will be infinite loop. So keep that in mind. अगर कभी भी infinite loop जाता है, if your programming is not stopping, it is going on and on. So then you have to check while loop if you are doing. So you have to check initialization, condition, and increment decrement. इन तीनों में से कहीं error है. Okay, so now I am going to execute it. 3 4 5. So now see, 5 numbers I have put 1 2 3 4 5. तो क्या हुआ, all numbers are positive. Okay, got it? ठीक है. Any question, any clarification? Are you clear else कैसे हो रहा है? See, all numbers are positive print हुआ. And if you type this code and run it and put any negative number, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे, you will see that all numbers are positive print नहीं होगा. Okay, then all numbers are positive print नहीं होगा. Okay, clear? Any questions, clarification before we move to the next thing?
Okay, guys, how many of you want me to wait? Type W in the chat box. कितने लोग चाहते हैं मैं वेट करूं बिफोर आई गो टू नेक्स्ट थिंग? टाइप W in the chat box. Great. So I'm going ahead. So now let us see for loops. Okay. So understand that for loops are special special approach is there in for loops. So what is the special approach? For loop is like for each. Okay. For each means what? For loop runs on the elements of a list or array than increment or decrement. ठीक है. So manual increment or decrement नहीं होता है in for loop. It works on the elements of the list या array. There is no manual increment or decrement in case of for loops. Okay, let's see with an example. See, okay, so let's say for I in range 5. Okay, and I say print, and I say print I. Okay, so just write this and run it, check karo. Yes, what is it printing? 0 1 2 3 4. Yes, what is happening? So range creates list of values. Okay, and returns them one by one. ठीक है. So range start कहाँ से होगा? Range is going to start with 0. So range 5 मतलब क्या होता है? Yes, so range 5. So see, when I write range 5, it means it will be converted like this. Range में 3 parts होते हैं. Range has 3 parts. Okay, start, end, and you can say step. ठीक है. So अब इसमें क्या हुआ? Start is like where you initialize. while loop में हमने जो initialize किया था, हमने initialize कैसे किया था? 0 से, right? If you want to do 5 times, अगर कुछ चीज 5 बार करना है तो हमने कैसे इनिशियलाइज किया था? 0 से काउंट को. रिमेंबर व्हाइल लूप में we had initialized count to 0 and then less than 5 लिखा था. less than 5 is the end. okay, 5 के पहले खत्म करना है. and what is the step? step means increment या decrement. तो कितना है? 1. अंडरस्टूड. सो रेंज 5 इसमें क्या होता है? रेंज स्टार्ट एंड एंड स्टेप. तो कैसे कन्वर्ट हो गया वो? it got converted into range 0 5 1. So 0 becomes start, 5 becomes end, and step becomes 1. And like this I का value goes 0 1 2 3 4. Clear? Okay, just like your while loop में 3 चीजें आप करते हो: initialization, condition and increment decrement. वही तीनों चीजें हमने एक साथ कर दिया यहाँ रेंज में. we have put all the 3 things in one place: start, end and step. Clear? Type C in the chat box if you are clear with this. जो हम
while loop में कर रहे थे तीन अलग अलग चीजें, now we have put them together so that it is ease of use. Okay, we'll be going in more details of range later. हम range के start end step क्या क्या कर सकते हैं, what happens if we use negative value of start, negative value of end या negative value of step, positive negative, सब कुछ we will be discussing mostly in the next class, so don't worry about that. So as of now just see for loop मतलब क्या हो रहा है, it is working on the array. सो यहाँ पे मैन्युअली कहीं इंक्रीमेंट हुआ क्या, इज देर एनी मैन्युअल इंक्रीमेंट, कहीं लिखा क्या काउंट प्लस वन, डिड वी राइट एनीथिंग मैन्युअली, काउंट प्लस वन काउंट माइनस वन, नहीं. कैसे लिया, हमने बस स्टेप को दिया वन, वी आर जस्ट असाइन वन वैल्यू टू द स्टेप, ऑटोमेटिकली पाइथन ने इंटरनली पाइथन हैज डन इट फॉर अस. सो रिमेंबर for loop में in Python, in for loop you cannot manually increment or decrement things, that will happen from the list. So one value at a time from the list or array will be taken. I'll give one more example. मैं और एक example देता हूँ जहाँ पे हम actually एक array use कर रहे हैं, so that your concept will be very clear. Let's say I take a array, let's say Python में array को list बोलते हैं, so let's say L1 is my list and I'm taking it 10 34 to 55. Okay, this is my L1. तो मैं क्या करता हूँ, I take L1. So now यहाँ पे क्या हो रहा है, I am just take one element from L1 at a time in I. क्या करना है, I में L1 का एक एक एलिमेंट लेना है, एंड यू कैन सी हियर व्हेन आई प्रिंटेड, पहले I में क्या आया 10, फिर I में क्या आया 34, फिर क्या आया 2, फिर क्या आया 55. सो नो मैनुअल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, राइट, नो मैनुअल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो नो बाय मिस्टेक इन्फिनिटी, जो अभी हुआ था हमारा बाय मिस्टेक इन व्हाइल लूप, वी हैड गॉन इन इनफिनिट लूप, राइट. व्हाइल लूप में हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भूल गया, we had forgotten putting a while in the while loop, we had forgotten putting an increment or decrement, and it went into infinite loop. But then in for loop, by mistake making an infinite loop is difficult. Okay, that's not possible easily. Okay, clear, one element from the array or list at a time. Okay, that is from L1 at a time. Clear, any question, any clarification before I go to the next thing? For loop clear hai? Type C in the chat box if you're clear. If somebody wants me to give more example, type M in the chat box. More M. If you are clear, type C in the chat box. Anybody wants me to wait, type W in the chat box. So C for complete, W for wait, and M for more. One of the three. Please respond so that I can take a decision. Okay, I'm going ahead. Now, another
construct which Python offers is called as for else. Okay, now again else, here the else part is executed when complete loop runs without break. ठीक है, अगर break नहीं हुआ then else part will run. So for this let's take an example. Let's say take a list. Okay, take a number from the user. If number is present in the list, print present. If number not in list, print absent. ठीक है, ओके, नंबर अगर प्रेजेंट है प्रेजेंट लिखना है, नहीं है तो एब्सेंट करना है. ओके, सिंपल. ओके, सो लेट्स टेक अ लिस्ट L1. L1 is equal to, let's say, take some random numbers. I'm just putting some random numbers there. Okay, okay, I've taken 5 6 I think 7 numbers I've taken. So now I'm going to ask user, let's say number. अब मुझे यूजर से कितनी बार नंबर लेने हैं? Take one number from the user. Take a number means one number. So one number from the user. तो यूजर से एक ही बार नंबर पूछना है. तो मुझे क्विकली बोलो, लूप के अंदर इनसाइड द लूप और आउटसाइड, आई और ओ, इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप, एक ही बार लेना है नंबर, तो इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप. Perfect. Oh, that means outside the loop. Very good. Int input, enter the number. Okay, and then now for loop. Now we are going to check. Let's say for I in L1. हम क्या करेंगे? Just like above, we are going to take one number at a time from the L1. Take one number from, take one value in I from L1. L1 की एक एक वैल्यू लो I में. Now we want to check. We want to check कि whether the input given by the user is in L1. तो क्या करना होगा? If I equal to number, चेक करना होगा I और नंबर मैच है क्या. ओके, इफ मैच, अगर मैच होता है तो क्या है? नंबर इज प्रेजेंट. सो प्रिंट प्रेजेंट. यस, बराबर है. लेट्स रन इट, चेक इट. रन करके चेक करते हैं. अगर नंबर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट आएगा. लेट्स से आई एंटर नंबर 34, प्रेजेंट है, प्रेजेंट आएगा, राइट. सो इफ आई रन इट अगेन, अगर मैंने बोला 78, 78 इज प्रेजेंट, प्रेजेंट आएगा. क्लियर हाउ वी आर गोइंग टू चेक द प्रेजेंट. ओके, we are going to take one number at a time from L1. यूजर का एक यूजर इनपुट लिया, from one number we are taking into I one at a time, checking with the number. If it is same, match हो गया, we are printing present. Okay, now understand there is a little bit trick here. अब एक छोटा ट्रिक है, एब्सेंट जब चेक करना है. So if number is not in the list तो absent. मतलब क्या? You have to check all the numbers and then say absent है या नहीं. अगर एक नंबर नहीं है तो इमीडिएटली एब्सेंट बोल सकते हैं क्या? सी, अगर मैंने if के else में डाल दिया प्रिंट एब्सेंट तो क्या होगा? else दिस इज if else. ठीक है, if का else है. ओके, सो मैंने if के else में एब्सेंट डाल दिया. अब मैं डालता हूं प्रेजेंट नंबर 78, तो क्या होता है देखो. सो अभी क्या आया? एब्सेंट 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 प्रेजेंट, फिर एब्सेंट एब्सेंट. क्या हो रहा है? इज द 78 प्रेजेंट और एब्सेंट? इट्स प्रेजेंट.
लेकिन क्या हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है. व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग इन एल्स पार्ट. इफ के एल्स में जा रहे हैं, सो देन इट विल बी रॉन्ग. ओके, एब्सेंट विल गेट प्रिंटेड मेनी टाइम्स. ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा. अगर मैंने इफ का एल्स डाला तो क्या होगा, इट विल गेट रॉन्ग. तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू? ओके, व्हाट आई विल डू इज, आई विल हैव टू थिंक. मुझे करना क्या है. अगर मैंने एल्स नहीं लिखा, 78 डाला तो बराबर प्रेजेंट आ रहा है. यस. अगर मैंने एल्स नहीं डाला, एब्सेंट नहीं सोचा, प्रेजेंट बराबर डिटेक्ट कर रहा है. ओके, सो नाउ पॉइंट इज, हमें एब्सेंट चेक करना है. एब्सेंट तब है जब सारे नंबर्स में चेक किया और नहीं है. सो व्हाट वी विल डू इज, हियर वी विल इंट्रोड्यूस ब्रेक. हम क्या करेंगे, प्रेजेंट है तो ब्रेक कर देंगे. ओके, इफ द नंबर इज प्रेजेंट वी विल ब्रेक द लूप. हमें पता चल गया कि प्रेजेंट है, वी विल ब्रेक द लूप. राइट. अब मुझे बोलो कि अगर लूप ब्रेक होता है तो क्या प्रेजेंट है, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो क्या है. इफ लूप डजंट ब्रेक, मतलब वो सारे नंबर्स को चेक किया, पहले 8 को चेक किया. लेट्स से इनपुट आया 100. लेट्स से इनपुट इज 100. पहला नंबर 8 है, प्रेजेंट होगा क्या, नहीं. सेकेंड नंबर 34, नॉट, है ना, प्रेजेंट प्रिंट होगा क्या, नहीं. 2, नो. 78, नो. 99, नो. 12, नो. 1, नो. तो प्रेजेंट प्रिंट हुआ क्या, नहीं. तो ब्रेक होगा, यस और नो. वाई और एन, ब्रेक होगा क्या लूप, यस और नो. प्लीज पुट इट इन चैट. वाई यार, यस और नो. ये, हाँ, ब्रेक ब्रेक होगा कि लूप. ब्रेक स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट होगा क्या, लाइन नंबर 13 होगा, लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट नहीं होगा. फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा. फॉर लूप विल बी कंप्लीटेड विदाउट लाइन नंबर 13 गेटिंग एग्जीक्यूटेड. प्रिंट होगा क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रिंट होगा क्या, नहीं. राइट, इट विल नॉट बी प्रेजेंट. 100, 100 हम चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग 100 इन L1. हम वेरी फर्स्ट चेक विथ 8, देन चेक विथ 34, देन चेक विथ 2, 78, 99, 12, 1. एनी टाइम प्रिंट प्रेजेंट, प्रेजेंट होगा क्या, नहीं. इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड. राइट. ओके, सो ब्रेक भी नहीं हुआ. फॉर लूप विल बी कंप्लीटेड. ओके, तब क्या होगा, देन इट विल गो टू एल्स. इफ फॉर, दिस इज फॉर का एल्स, when for loop completes without break. फॉर लूप पूरा कंप्लीट हो गया विदाउट ब्रेक, तब कहाँ आएगा, एल्स में. नाउ वी राइट इन एल्स प्रिंट एक्सेप्ट. क्लियर है, समझ में आया. इफ आई पुट 100, नाउ इट इज गोइंग टू से एब्सेंट ओनली वंस. आर यू क्लियर, क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन. दिस इज फॉर एल्स. Are you able to run the code? Is there any problem? If number which is present in L1
then present is printed. If it is not present, then absent is printed only once. Present is also printed once and absent is also printed once. Yes. If there is an error or something, type E in the chat box. I will check your code. Okay, how many of you have completed? Anybody wants me to wait? Type W. How many of you still typing the code or trying out things? Then type W in the chat box. Otherwise, we will discuss the next thing. Okay, great. I'm going ahead. Chalo, acha hai. Very nice. Uh, okay, let's go ahead. Now, one very common questions. Okay, common logic questions. Okay, which are going to be there in your coding rounds, in your interview questions, and all that. Okay, now on loops or events. Okay, let us discuss one or two of them, and then I will share you a list of assignments. You try them on your own. Okay, in the coming days. Okay, let's say question one, a very popular question, which is prime number. Check if given number is prime or not. ठीक है, एक नंबर दिया है, वो प्राइम नंबर है या नहीं है. So let's take a number from the user. Number int input, enter a number, and we want to check it. Okay, check it if it is prime or not prime. Okay, so think about it. Okay, I'm giving you 2-3 minutes. Okay, 2-3 minutes, think about it. प्लीज टेल मी, मुझे एक चीज बताना है. टेल मी व्हाट यू विल यूज. ओके, विल यू यूज फॉर लूप
or will you use for else, और will you use while or while else, दोनों में से क्या यूज करोगे, which one you would use. Okay, for else या while else, which one you would go for. Think about it for a minute. चेक करो क्या करना होता है प्राइम नंबर में. Think about it and get back to me in 2 minutes.